So today we are going to discuss about the environmental science. It's about I will tell you about the definition, then scope and the importance of environmental science. So the science of environment studies is a multidisciplinary science because it comprises various branches of studies. तमे एनवायरमेंटल स्टडीज उपरे जदि आमे डिस्कस करिबा वी हैव टू गो थ्रू द सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री आमको केमिस्ट्री उपरे ये करिबा पई डिस्कस करिबा पई पड़िबो देन फिजिक्स मेडिकल साइंस लाइफ साइंस एग्रीकल्चर पब्लिक हेल्थ सैनिटरी इंजीनियरिंग एटसेट्रा ये सब गुड़ा फील्ड उपरे आमे जदि ओवरऑल नॉलेज गेन करिबा देन तापरे आमे जानि परिबा जे व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस. इट इज द साइंस ऑफ फिजिकल फेनोमेना इन द एनवायरनमेंट. आम चारिपाखे जो एनवायरनमेंट अच्छी जो परिवेश अच्छी तार गोटे एटा फिजिकल फेनोमेना को कहा जाए. इट स्टडीज ऑफ द सोर्सेस रिएक्शंस ट्रांसपोर्ट्स देन इफेक्ट्स and fate of physical biological species, the living species in the air, water and land. You can tell it also the soil. And the effect of human activity, मनुष्य मानकर जो एक्टिविटी अच्छी अपन दिस तांको ऊपर तार कौन प्रभाव पड़ुछि. लिटरली एनवायरनमेंट मीन्स कौन आमे एनवायरनमेंट रो मीनिंग टा कौन आगे जानिबा दरकार. द सराउंडिंग एक्सटर्नल कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंसिंग डायरेक्टली द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पीपल देन एनिमल्स देन प्लांट्स and all the living and working condition etc. This involves three questions. तीनटा क्वेश्चन ये आसे. What is surrounded? I will give you the answer to this question is living object in general and man means the human being in particular. By what surrounded? The physical attributes are the answer to the questions. Which become environment, say to the environment. So the concern of all the education in the environment is the environment of man. ये जो environment है मनुष्यर environment. However, man cannot exist or be understood in the isolation from the other forms of life or from the plant life. Hence, environment you refer to the sum total of the condition. Here, definition of the environment. Some important definition of environment किछि कहबी मु तुमको जो important environment रो definition. A person गोटे मनुष्यर environment that consists of the sum, the total of the stimulation which he receives from his conception until his death. मृत्यु पर्यंत. It can be concluded from the above definition that environment that comprises various types of forces. बहुत गुड़ा टाइप रो फोर्सेस थाए. फिजिकल थाए, इंटेलेक्चुअल थाए,
इकोनॉमिकल प्रोसेस थाए, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, मोरल भी आम कही परिबा, एंड इमोशनल. Environment is the sum total of all the external forces, influence and conditions which affect the life, the nature, and the growth and development of the living organisms. So environment रे जो आमे एबे स्कोप ऊपर डिस्कशन करिबा, स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट कौन हमको दउची की आमे कौन पाउचू, what can we get from environment? The environment consists of four segments as under atmosphere roila. The atmosphere implies the protective blanket of the gases that surrounded us. गोटे प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट रोचे जोटी विभिन्न प्रकार गैस आच्छादित होइकी रही, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, so many types of gases. It sustains life on the earth. आम अर्थ रे आज जदि आम लाइफ देखा पाऊँ, it's only about the atmosphere. It saves it from the hostile environment of the outer space. Outer space रो जो hostile environment रो आमको ये सेव करूछ. It absorbs most of the cosmic rays, UV rays, ultraviolet rays, सूर्यंक पाखरु जोटा आसे, from the outer space रू भी आसे, and a major portion of the electromagnetic radiation from the sun. या पाखरु भी आमको ये बंचौछ. It transmits only here ultraviolet, visible near, infrared radiation. तार जदि आमे मिलीमीटर देखिबा 300 to 2500 mm भितरे, रेडियो वेव्स 0.142 40 मीटर ए भितरे रोची, filtering out the tissue, damaging the ultra visible waves below about 300 mm. So the atmosphere is composed of nitrogen and oxygen को नहीं गई. Besides ता बादे भी अन्य गैस अच्छी, आर्गन अच्छी, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी, and other gas भी अच्छी, trace gas भी अच्छी बहुत गुड़ा. So here then we come to the hydrosphere. Hydrosphere जो रही ची comprises all types of water resources. ता भितरे oceans रहिला, seas रहिला, lakes रहिला, rivers रहिला, streams रहिला, reservoir रहिला, polar ice caps रहिला जोड़ा पोल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रे अच्छी, ग्लेशियर्स रहिला एंड ग्राउंड वाटर भी रहिला. Nature 97% of the earth's water supply is in the oceans. About 2% of the water resources is locked in the polar ice caps and glaciers in the form of ice. So only about 1% is available as a fresh surface water. Rivers जो कहूँ, लेक वाटर जो कहूँ, streams कहूँ, pond कहूँ, ground water fitted to be used for the human consumption and other uses. Then come to the lithosphere part. Lithosphere is the outer mantle of the solid earth. ताको outer
ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଲିଥୋସ୍ଫିୟର where we construct our house